હરની એરપોર્ટ પર આવતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ રદ થતાં મુસાફરો હેરાન થઈ રહ્યા છે. છેલ્લા 6 દિવસમાં 37 ફ્લાઇટ રદ થઈ છે. હરની એરપોર્ટ ઉપર રવિવારે મુંબઈ અને બેંગ્લોર રૂટની ઇન્ડિગોની વધુ 6 ફ્લાઇટ રવિવારે રદ કરાઈ હતી, જેના કારણે અંદાજે 900 મુસાફરોને હાલાકી પડી હતી. હરની એરપોર્ટ ઉપર ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ રદ થવાનો સિલસિલો છેલ્લા 6 દિવસથી યથાવત રહ્યો હતો. પાયલટ્સ અને ક્રૂ મેમ્બર્સની અછતના કારણે દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન્સ ઇન્ડિગોની કટોકટી યથાવત છે. 8 ડિસેમ્બરને સોમવારે ગુજરાતમાં ઇન્ડિગોની 26 ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ છે. રાત્રિના 12થી સવારના 9 વાગ્યા સુધીમાં અમદાવાદની 18, રાજકોટની 4, સુરતની 3 અને વડોદરાની 1 ફ્લાઇટ રદ થવાની માહિતી મળી છે. મુસાફરોને પડતી મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં રાખીને રેલવે દ્વારા મોટા શહેરો જેમ કે મુંબઈ, દિલ્હી, પુણે, હાવડા, હૈદરાબાદ સહિતમાં વિશેષ ટ્રેનો શરૂ કરવામાં આવી છે અને આ સાથે જ અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર ટ્રેનનું બુકિંગ કરવા માટે આરસીટીસીનું કાઉન્ટર પણ ખોલવામાં આવ્યું છે. વડોદરામાં ઇન્ડિગોની મુંબઈ વડોદરા મુંબઈની ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ફ્લાઇટો કેન્સલ થતાં મુસાફરો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. અગત્યના કામો માટે ઝડપી પહોંચી શકાય તે માટે હવાઈ માર્ગ પસંદ કર્યો હતો, પણ લોકો હવે પરેશાન થઈ રહ્યા છે. લોકોનો આક્રોશ પ્રગટ કરતા વિડીયો પણ સોશિयल मीडिया में सामने आ रहा है. 5 दिसंबर से अहमदाबाद से कोची से फ्लाइट था. मैंने कोची का टूर प्लान किया था 5 to 11 से. यहाँ से हमको सुबह मैसेज आ गया कि यू कैन डू द टेली चेक इन. तो उसके कारण हम अहमदाबाद पहुंचे. तो अहमदाबाद पहुंचे तो वहां से कोई भी भरोसा नहीं था कि फ्लाइट जाएगी नहीं जाएगी. ओके, फ्लाइट नहीं जाएगी जैसे ओके, बट एटलीस्ट यू शुड हैव टेल इन एडवांस. उसका भी नहीं, ठीक है, उससे रिफंड मिलेगा, नॉट इशू. बाय डिफॉल्ट एज पर रूल दे हैव टू गिव दी रिफंड. अगर फ्लाइट डिले होते तो वो उसका नहीं, वो मिलेगा. लेकिन आगे जो मैंने पैकेज बुक किया था केरल पैकेज का, उसका मेरा नुकसान हो गया. हु विल कॉम्पेंसेट फॉर दैट? उसका कॉम्पेंसेशन कौन देगा? मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ है, वो इंडिगो देगी क्या वो नुकसान हुआ? मेरा छोड़ो, ऐसे वहां पर कितने सारे लोग थे कि जिनका बहुत सारा नुकसान हो गया है. किसी को एग्जाम के लिए जाना था, किसी को बिजनेस डील के लिए जाना था, किसी को मैरिज के लिए जाना था. ऐसे छोटे जो दूल्हा दूल्हे थे वो भी फंसे थे, उनकी शादी भी नहीं हो पाई. हु विल बेयर ऑल दिस लॉस? पूरे इंडिया का इतना नुकसान हुआ है कि पूरी इंडिगो बेचेंगे तो भी वो लॉस भर नहीं होगा. इंडिगो की जवाबदारी है, बिकॉज DGCA had told them well in advance to recruit the top and the staff and take the decision. They have ignored it. This is full fault of Indigo. They should have taken action well in advance. DGCA ने उनको कब से बताया है कि स्टाफ रिक्रूट करो, ये हैव टू इम्प्लीमेंट दिस रूल. DGCA इज राइट, बिकॉज उनको जो स्टाफ है इनको ज्यादा तो स्टेज देना नहीं चाहिए, बिकॉज इट ऑलरेडी मैटर ऑफ सेफ्टी ऑफ देयर ओन एंड देयर ट्रैवलर्स. तो उन्होंने इग्नोर किया. ये पूरा फॉल्ट इंडिगो का ही है. इंडिगो मस्ट बी पनिश्ड एज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट. रिफंड अभी तो उन्होंने मुझे कहा मेरा रिफंड मिला है, वो बोल रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट आई एम एटलीस्ट सेटिस्फाइड ऑन दैट पोर्शन. बट बाकी जो नुकसान उसका क्या? बाकी जो मेरा 1 लाख का पैकेज है वो गया. हु विल बेयर दैट? चलो मेरा तो छोटी अमाउंट है, बाकी लोगों को अब करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. किसी को बिजनेस डील के लिए जाना था, किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई है. कैसे वहां पर स्टूडेंट थे, उनको एग्जाम के लिए जाना था, वो एग्जाम के बेसिस पर उनका आगे फ्यूचर डिसाइड होने वाला था. तो वो हु विल कॉम्पेंसेट दैट?